I know most of the people sitting here. They're my residents. So the idea of having this instructional course, Dr. Seema and myself, we decided this, and we did this last year also, uh, just to bring home the message कि आप जितने भी अच्छे सर्जन हो, जितने भी अच्छे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आखिर में अगर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो you're considered to be a bad surgeon, you're considered to be a bad डॉक्टर एंड सो एंड सो फोर्थ. और हमारा जो ऑप्थल्मोलॉजी के अंदर जहाँ चीज़ ख़त्म होती है वो यही होती है कि आपकी हाउ वेल दे कैन सी एंड हाउ कंफर्टेबल दे आर विद द ग्लासेस. सो you're one of the best surgeons, you do complicated things, you do all of those things, और उसके बावजूद भी if the patient is not satisfied because he feels it's just not right, then then the patient says that you're a lousy doctor. So Dr. Seema and myself, we both, being pediatric ophthalmologists, feel that रेटनोस्कोपी हर एक को आनी चाहिए और ग्लासेस का नंबर सही होना चाहिए, और वो सबसे इट्स द पिवट वेयर ऑप्थल्मोलॉजी स्टैंड्स, regardless of the macular surgeries that you're doing and the premium lenses that you're putting in. And therefore, we thought we should have this discussion. The other thing through this that we want to send home the message is that one size does not fit all. And one surgeon or one doctor giving something does not mean that they're giving it wrong. There are different ways of doing the same thing and getting a good result. So I'm going to show cases, we're going to discuss them. I would want your involvement in it also. So, and then I will ask Dr. Seema what her opinion is. And that's how we're going to go forward. So we're going to start with simple cases and then kind of build up so that everyone seems to be on the same page. So the first case is a 3-year-old accompanied with a mother who complains of shaking of the eyes. It presents all the time and there is no null point. No one in the family has this problem. So once you look at this, what are the things that come to your mind? What are the shaking of eye? It's present all the time. There's no null point, so the kid is not really putting any head posture to look at things, and there is no family history. So आपका differential diagnosis पे क्या क्या बनना शुरू हो जाता है? पहला तो आता है ना nystagmus, दूसरा आता है cortical visual blindness, तीसरा आता है delayed visual maturation. यही आता है ना? इसके अलावा कोई आता है? इसके अलावा कोई आता है? So we do an examination. He's not focusing on anything. The external exam shows a roving eye movement. So आप याद रखना, जब भी आपके पास पेरेंट्स आ रहे हैं वो यही कहेंगे कि इसकी आंखें हिलती हैं. Now that could be a roving eye movement, that could be nystagmus, that could be something else, and that is where your work begins. Hirschberg test is normal. Fundus exam shows a myopic fundus. And when you do a retinoscopy, there's a myopia of -6 severe. So what is the diagnosis? There's a refractive error. Why is there a roving movement then? There's a searching movement because the patient cannot focus on things. And अगर इसका ये refractive error 3 साल में -6 है, तो मुमकिन है जब ये पैदा हो तब भी ये मायोप हो, तो इसका शायद फोबिया सही तरह डेवलप ही नहीं हुआ, और अगर डेवलप हुआ भी है उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा. So you know, for your eyes to fixate on something, you need to be able to see. इसको मैनेज कैसे करेंगे? -6 नंबर है, roving eye movement है, क्या करेंगे? And these are, by the way, real life scenarios which Dr. Seema and myself have seen in our practices, where the most, ये वो केस है जिसके अंदर मोस्टली ये कहा जाता है इसका कुछ नहीं हो सकता, फंडस देखा नहीं हुआ, रेटिनोस्कोपी की नहीं हुई, और रोविंग आई मूवमेंट देख के क्या इसका कुछ नहीं किया जा सकता. सो दे आर रनिंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर. सो इसको मैनेज कैसे करेंगे? या इसको ये कहा जाता है कि इसकी सर्जरी होगी, बिकॉज आपने अगर निस्टैग्मस को ट्रीट करना है तो नल पॉइंट को आपने उसके सेंटर में लाना है. तो जी मैनेजमेंट इसकी क्या करेंगे? मैनेजमेंट यही होगी ना कि ग्लासेस देंगे. अब इसके ऊपर सवाल ये आता है कि कौन सी ग्लासेस का नंबर देंगे.
So this is an American Academy of Ophthalmology guidelines of which number to give to what person. Now the reason I'm showing this is because इसका अगर आप flip side लें, 3 साल के बच्चे को अगर -3 से कम का नंबर होता है तो उसको वो भी दे दिया जाता है, राइट? या अगर कोई हाइपर ओपेक है जिसका +1 नंबर होता है वो भी दे दिया जाता है काफी दफा, फिर आज उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ग्लासेस का नंबर, क्योंकि ये 3 साल का बच्चा है और इसका 3 से ऊपर नंबर था, तो इसको ऐनक दी जाएगी। अगर यही 3 साल का बच्चा होता और उसका 2.5 नंबर होता तो फिर आपने ऐनक नहीं देनी थी, -2.5 की बात कर रहा हूँ, और कुछ और चीजें इन्वेस्टिगेट करनी थी कि किस वजह से इसकी ये रोविंग मूवमेंट्स है। ठीक, अब अगला सवाल ये है, इसको नंबर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? 6 आ रहा है, 3 साल का बच्चा है। So madam, this is where I would want you to come in. So there's a 3-year-old child, his refractive error is a -6. Would you give him a full prescription or would you give him 2/3 or 1/2 or not at all? The first question which I would like to ask from all of you is कि अगर ये मायोप है तो why do you think that this roving eye movement is because of only myopia or there is something else also? थोड़ा सा दिमाग को खोलो। Because what do you think what happens in myopia? Myopia में क्या होता है? Any one of you, you're a myope sitting there, right? आप बैठे you're a myope probably. अगर ये ऐनक उतार लो तो क्या होता है? ऊंचा बोलो। नियर विजन को क्या होता है? थोड़ा सा आगे आके बोल, खड़ा हो जाओ बेटे, ऊंचा बोल। अच्छा, बाय द वे एक प्रिंसिपल रख लेते हैं, जो भी जवाब देंगे दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन। शी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू बी अराउंड, सो इसके ऊपर आपको जज नहीं किया जा रहा, जस्ट I'm not doing judgment exactly. What do you think what happens? If you take off your glasses, what happens? ये इतना ऊंचा बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कह रहे नियर पे विजन इंटैक्ट रहती है, हाँ, और फार के ऊपर। So why did this child was not able to see? Because the child is a myope. और जो बच्चा छोटा होता है, जैसे डॉक्टर ने कहा 3 साल से छोटा बच्चा है, तो उसका ये मतलब अगर 1 साल का बच्चा है और वो मायोप है, तो डू यू थिंक उसको रोविंग आई मूवमेंट्स होनी चाहिए? यस और नो? बिकॉज उसकी नियर विजन तो इंटैक्ट है। नियर विजन, और जो छोटे बच्चे होते हैं, एज आई अंडरस्टैंड इज कि लेस देन ईयर तो उनकी दुनिया बहुत छोटी है। सो समटाइम जो व्हाट इज द रीजन कि जब लेस देन 3 इयर्स ऑफ बच्चे को हम पूरी करेक्शन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनकी दुनिया बहुत छोटी है, उन्होंने तो इतना ही देखना है ना, इतना तो वो ऐनक के बगैर भी देख रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी जो है दुनिया बड़ी होती जाती है। वो ये जरूर होगा कि माँ बाप ये कंप्लेन करेंगे, अगर बिल्कुल एवरीथिंग एल्स इज ऑल राइट एंड द चाइल्ड इज ओनली अ मायोप, द पेरेंट्स वुड से कि जी दूर से शक्ल नहीं पहचानता, लेकिन जब करीब आते हैं वो चलता फिरता भी है, वो जमीन से गिरी चीजें भी शायद उठा लेता है, चीजों को यूं करके भी देख लेता है। तो इस बच्चे में मतलब आई वुड रियली लाइक टू नो कि अब जो जैसे अली ने कहा कि ये प्रॉबेबली इसका फोबिया नहीं डेवलप हुआ, दैट वाज अ रीजन कि इसकी नियर विजन अफेक्टेड रही एंड दैट इज व्हाई इसको। अदरवाइज अगर इसका मतलब ये कि जब ये पैदा हुआ होगा ना तो इसका -6 -5 का किस्म का ही नंबर होगा, 1 2 3 1 2 किस्म का नंबर नहीं होगा। सो प्रॉबेबली दिस चाइल्ड व्हेन इट पैदा हुआ तो उसी वक्त ही हैड अ हाई मायोपिया। तो इस बच्चे में व्हाट आई वुड डू इज आई विल प्रॉबेबली गिव अ फुल करेक्शन बिकॉज उसको ऑलरेडी विजुअल डिले हो गया है। So I would like to give him the best possible जो उसको हम कर सकते हैं। And this is the beauty of having different people talk about this, because everyone would have a different one. Now, a lot of ophthalmologists, pediatric ophthalmologists would give a full correction, and that's right, right? The other ones, so she's on one spectrum, I'm on the other ones would give जो working distance है उसको cover कर देंगे। जिस तरह मैडम ने एक दफ़ा बात की थी कि उसकी जो दुनिया है, आप में से कितनों के बच्चे हैं? सो जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं 5 साल की उम्र के अंदर, वो कितने बड़े कमरों में बैठ रहे होते हैं? द यूजुअल डिस्टेंस इज अबाउट 3 to 4 meters, नॉट 6 meters. सो उनकी दुनिया छोटी ही है, राइट? सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट यू डू इज you're giving them various reasons, and I'll tell you why.
you'll give them the distance which will cover their working distance. So अगर 6 नंबर है तो आप उसको 4 दे सकते हो क्योंकि वो आपके 4 मीटर के ऊपर काम कर रहा होगा, 6 मीटर की अभी उसको ज़रूरत ही नहीं है, और जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसका नंबर बढ़ाते जाएंगे. इसकी 2 वजह हैं. अच्छा, और कुछ लोग हैं जो कि पूरा का पूरा नंबर फौरन ही दे देते हैं. बट व्हाट द रीज़न आई डू दिस इज़ कि अगर हमारा शुरू के अंदर हम उसको नियर का विजन क्लियर कर देंगे और वर्किंग डिस्टेंस को क्लियर कर देंगे तो वो जो फोबिया की एक डेवलपमेंट होनी है वो शुरू हो जाएगी, और जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम नंबर को चेंज करते जाएंगे. सो देयर टू थिंग्स दैट आई डू. वन इज दैट आई टेल द पेरेंट्स दैट आई एम नॉट करेक्टिंग हिम फुली. So if he cannot see a board while a billboard while you're driving, that's fine for now. And as he grows or as his work challenges start increasing, we are going to increase the number. The reasons I do this, as I said, are two. One is that I don't want parents to freak out कि इतना बड़ा number है. Because जब भी आप किसी को कहते हो उसको ऐनक लगनी है, the first thing they ask is इसका नंबर क्या होगा. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू देम कि नंबर कुछ भी हो, हमने देखना है कि विजन कितना बेहतर होगा. सो आई वांट इट टू सिंक इन थोड़ा सा एंड देन कॉल देम बैक एंड सी इट. द अदर इज कि आई वांट द चाइल्ड टू गेट कंफर्टेबल ऑल्सो. जब आपने माइनस का कभी आंख के सामने नंबर रखा तो हर चीज छोटी हो जाती है, तो छोटी दुनिया में और छोटी हो जाती है, ना नजर आने में दुनिया और छोटी हो जाती है. सो आई वांट दैट अडेप्टेबिलिटी टू हैपन. So there are times when I give the full correction if I know that the patient will not come back to me. आप देख रहे होते हैं ना कौन सा पेशेंट है जो कि फॉलो अप पे आएगा, कौन सा पेशेंट है जो नहीं आएगा, और जो फॉलो अप पे आएंगे उनका एक ग्रेजुअली बिल्ड इट अप. एंड इंटरेस्टिंगली नाउ जो मैं शुरू में बात कर रहा था, two different people having two different strategies and both work perfectly fine. And this is one I would of just those like to cases. add on कि ये बच्चे की चूंकि roving eye movement है तो probably I will go for a full correction. अगर ये बच्चा ऐसे ही आया होता 660 vision होती या something like that, maybe less, then we can start from a, but that's what I think. Then we can start from a lower number and keep the parents on the board कि they have to come back again. और जैसे अली ने कहा था कि वो parents को सिंक इन नहीं करता कि इतना ज़्यादा नंबर के, तो उसका मेरे पास एक ही जवाब था, जितनी सर्दी थी उतना ही मोटा स्वेटर पहनते. Okay, so we go into the second case. A 3-year-old accompanied with a mother who complains of going too close to the TV while watching it. When he is moved back, he stays there for a while, but then moves towards the TV. There is a family history of glasses. On examination, the vision is 20/40. 3 साल का बच्चा, याद रखते रहना है आपने. 20/40, which is about 6'9". Hirschberg test is normal, fundus is normal, retinoscopy shows a hypermetropy of +4 Saphir. What will you do? A, what is the diagnosis? B, what will you do? 3 साल का बच्चा है, 4 नंबर आ रहा है, टीवी के करीब बहुत जाता है, और फंडस वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है, विजन 6'9" है. सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया है. ओके, हाइपरमेट्रोपिया है. हाउ विल यू मैनेज दिस केस? ग्लासेस देंगे. सो देयर इज वन आंसर, ग्लासेस देंगे. If near vision is normal, keep observing. Or +4 is normal for a 3-year-old, तो उसको ग्लासेस नहीं देंगे. 3 जवाब आ गए ना. अच्छा, जो कह रहे हैं ग्लासेस देंगे, पूरा नंबर देंगे या आधा देंगे या 2/3 देंगे या 3/4 देंगे, क्या देंगे अगर देंगे ग्लासेस? Sorry, 50% number? Okay. So आप कह रहे हैं ग्लासेस देंगे लेकिन नंबर कम देंगे. मैडम आप +4 की रेटिनोस्कोपी के +4 का नंबर +4 की साइक्लोप्लीजिक रेटिनोस्कोपी है. फिर कुछ भी नहीं देंगे. This is very important. Remember the American Academy of Ophthalmology guidelines. For a 2 to 3-year-old, +4.5 से बड़ा नंबर होगा तो ग्लासेस देनी है क्योंकि ये नॉर्मल है.
आप याद करें जो ई मेट्रोपाइजेशन एज है वो क्या है, एनीवेयर फ्रॉम 6 to 8, ठीक, ये 3 साल का बच्चा है, तो इसका नंबर कहीं भी हो सकता है फ्रॉम 3 to 4, which is normal. Remember, there is a 25% overprescription rate in the developed countries. In the West, 25% overprescription rate है. एक बच्चा जिसका 20, 40 और 3 साल का है वो नॉर्मल है. वो टीवी के करीब इसलिए जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो जाता है और जैसे कोई चीज़ आती है तो वो आगे मूव करना शुरू हो जाता है. उसकी हम लोग भी वो करते हैं. जब कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और कोई छक्का लगता है या कोई आउट होता है तो वी स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द टीवी, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज वी गेट एक्साइटेड. ऐसे बच्चे को नंबर नहीं देंगे, बट ऐसे बच्चे को ये नहीं है कि आपने नंबर नहीं दिया इसको छोड़ दिया. You will call them back so that you can recheck what the vision is, you can recheck what the refraction is. But go on. इस केस में एक कैच था जो शायद तुम लोगों ने किसी ने नहीं पकड़ा. The child was going near to the TV and he was a +4 retinoscopy. अगर यही बच्चा इसकी retinoscopy minus पर होती, then it would. So a hypermetro generally would not go near the TV. So that was a catch. अवश्य जान के डाला होगा इन्होंने. Yes. Which no one of you picked it up. Why So not? so my recommendation would be just keep this in front of you. ऑप्थल्मोलॉजी में और डॉक्टरी के अंदर हाफ्जे का कोई मतलब इम्तिहान नहीं होता. आपके एग्जाम्स में होता है बट वैसे नहीं होता. सो इवन इफ दिस इज जस्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू इन योर क्लिनिक्स, you will know exactly what to do for such patients. A 25% overprescription rate is a problem. अगर वेस्ट के अंदर वो 25% है तो यहाँ आई एम 100% श्योर ज़्यादा है. जी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ. जिस तरीके से डॉक्टर जी ने बताया कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स आकर उस प्रेजेंट कर रहे हैं 68 के बच्चे की. तो इसमें काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. बिल्कुल सही, आई एग्री, नंबर नहीं देना, लेकिन आप पेरेंट्स को काउंसल जरूर करना है, क्योंकि वो अगर आप उनको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे किसी और पर चले जाएंगे. और अगर वो किसी अच्छे बंदे के पास चले जाते हैं, लाइक जो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी का अगर उसको थोड़ा काम भी पता है या आप प्रेस्क्रिप्शन को करता है तो वो सकता है नंबर प्रेस्क्राइब कर. तो इसमें आप इसको अच्छी तरह काउंसल करके ये चीजें एक्सप्लेन करनी है. सो बच्चों में काउंसलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने एक सेशन अलग रखा. अच्छा सर, वो आप जो बात कर रहे थे, इसी बच्चे का नंबर अगर 5 होता तो फिर हम एनक भी देते और फिर उसको 2/3 नंबर दे देते, पूरा ना देते, क्योंकि आंखें सीधी हैं. सो यू यूजुअली गिव 2/3 ऑफ अ नंबर, बिकॉज अगर आप हाइपरमेट्रोपिया देखें उसके अंदर फैकल्टेटिव एलिमेंट भी है, उसके अंदर एब्सोल्यूट भी है, तो आपने से वो देना होता है जो मैनिफेस्ट हो. अच्छा जी, केस 3. 3-year-old accompanied with her mother who complains of going too close to the TV while watching it. When he has moved back, he stays there for a while but then moves forward. There is a family history of glasses. Same case आ रहा है. Vision is 20/40. Hirschberg test पे there is inward turn of the eye. Cover uncover पे he has esotropia. Fundus exam is normal. Retinoscopy shows a hypermetropia of a +1.5. Now go back and think about case number 2. 3 साल का बच्चा था, +4 का नंबर था, आंख सीधी थी, तो हमने डिसाइड किया था उसको नंबर कोई नहीं देना. अब यही 3 साल का बच्चा है, 1.5 का नंबर है और उसका ईजोट्रोपिया है. जी सर साइक्लोप्लीजिक. सो दिस इज एक्सेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नो, अगर आपको आंख अंदर जाती नजर आ रही है तो फिर आप अपना दिमाग बंद भी कर लें तो ठीक है. जो नंबर आ रहा है वो आप दे दें और पूरा दें. मैडम, इस पे आप कुछ डू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? वापस कब बुलाएंगे इसको? वापस कब बुलाएंगे? ओके, बाय. And when would you repeat the retinoscopy? After 3 to 6 months. So yeah, you're calling them back. By the way, if he was not cyclopleged,
अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया में जैसे ही ऐनक बनाते हैं तो आंख सीधी हो जाती है. सो देयर इज no learning curve or no waiting area. Usually I call them back after about 6 to 8 weeks just to check whether the deviation is there and also to check whether vision has decreased. क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है. We want कि आंखें सीधी हों लेकिन विजन कॉम्प्रोमाइज ना हो. सो a lot of times आप 1.5 नंबर दे रहे होते, लेट्स से ये 3 नंबर होता, हम 3 नंबर दे रहे हैं, अगली दफ़ा आया आंखें सीधी हैं लेकिन उसका विजन गिर गया हुआ है, तो फिर हम उसको प्लस 0.5 कम कर देंगे विदाउट इवन डूइंग साइक्लोप्लीजिक. We want, this is one case where we want a mix, where we don't want the vision to be compromised and we want stereopsis to develop, so we want the eyes to be straight. ठीक. केस 4. देखिए जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं उम्र भी बढ़ती जा रही है पेशेंट्स की. So 12-year-old complains about having difficulty reading for long. He says the vision at distance is fine and the vision at near is initially fine but then the words start splitting. ठीक. So वो कहते हैं कि दूर पे सब कुछ सही है, नज़दीक देखते हुए शुरू में सही होता है लेकिन 5-10 मिनट के बाद चीज़ें स्प्लिट करना शुरू हो जाती हैं. They become 2 and sometimes 3. Now kids imagination भी होती है तो उसको आपने सामने रखना है. Mother also says that he skips words and lines while studying. There is no family history of glasses. So on examination, the vision is 20/20. Hirschberg is normal. Cover uncover पे कोई deviation नहीं है. Fundus exam normal है. Retinoscopy पे कोई refractive error नहीं है. क्या हो सकता है इसको? Sorry? So इस पेशेंट को convergence insufficiency हो सकती है. And if you ask the patient to converge, the left eye goes out. Now this is one case जिसके अंदर हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि बच्चे को नज़दीक की ऐनक दी हुई होती है जबकि उसकी कन्वर्जेंस कभी चेक नहीं की होती. So पहले एक दफ़ा कन्वर्जेंस चेक कर लो, अगर उसकी कन्वर्जेंस इंटैक्ट है तो फिर एक और चीज़ करनी है, उसके बाद ऐनक देनी है. देखें बच्चों के ऊपर थोड़ा सा there's something जो कहा जाता है कि kids are miniature adults. I absolutely disagree with it. They are not miniature adults. They are an absolute different species and you have to manage it accordingly. किसी बच्चे को भी ग्लासेस दे रहे हो जिसको नहीं ज़रूरत, तो एक इमोशनल ट्रॉमा है पूरे ख़ानदान के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर भी. किसी को ग्लासेस नहीं दे रहे तो उसके लाइफ लॉन्ग रिपरकशंस है. और किसी बच्चे को जिसको दूर की नज़र सही है और क्लास में वो नज़दीक का काम करने के लिए ऐनक पहन रहा है, तो उसको आप ससेप्टेबल कर रहे हो फॉर बुलिंग ऑल्सो. मेरे दादा भी ऐसी ऐनक पहनते हैं तो मेरे दादा की उम्र के हो, एंड सो फोर्थ. वीव हर्ड दीज कमेंट्स कम इन. सो उनकी कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी चेक कर लें. अगर कन्वर्जेंस सही नहीं है तो उनको ग्लासेस नहीं देनी. तो फिर सवाल है फिर करना क्या है. जी मैडम. डॉक्टर अशल बैठे हैं जी. So this is one case so called pencil push-ups जिसके अंदर we do pencil push-ups or computer exercises where we normally the seniors who sitting in the refractive surgery किसने की हुई है. refractive surgery के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि नज़दीक के अंदर उनको प्रॉब्लम ही रहता है. राइट. नज़दीक शुरू में इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी अकोमोडेशन नहीं यूज़ की, तो उनके यहाँ सर दर्द रहता है. तो उस पर हम उनको कहते हैं कि जितना ज़्यादा नज़दीक का काम कर सकते हो करो. वही स्ट्रैटेजी इधर चलेगी. ऑल्दो अकोमोडेशन इंटैक्ट है, कन्वर्जेंस का इशू है. यू आस्क देम टू मोस्टली आप बच्चों को कह रहे होते हैं स्क्रीन्स नहीं देखनी, इस घंटे से ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं देखनी. ये वो अनॉमली है जिसके अंदर कहना है यार जितनी ज़्यादा वीडियो गेम्स नज़दीक पे खेल सकते हो देखो, just so that they start converging and converging and converging. And the best exercises कि वो जो but I always tell them कि वो especially girls कि वो नहीं वो bracelets बनाते हैं फिश वायर और उसमें मोती पर बैठ कर. That is the best exercise I believe.
और मुझसे आज तक कभी नहीं, मैं बचपन में अपने कजन्स के वो साथ नजर कोशिश नहीं की आता थी, ना, नहीं, हाँ वो नहीं कर लो होता। तो बस काम बन गया। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज आई थिंक, So- बेटर देन द वीडियो गेम। और इसके अंदर वही डॉक्टर अशल की फिर से बात करूंगा कि आपकी इसके अंदर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग पेरेंट्स, यू टेलिंग वन चाइल्ड, उसके भाई को, कि स्क्रीन टाइम जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी, और दूसरे को कह रहे हो यार तुम जरा लगे रहो, तो यू हैव टू काउंसिल देम वेल कि इशू फर्क है, एंड ऑल्सो द पेरेंट्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी द इलाज। बिकॉज जब आप सिर्फ पेंसिल पुशअप्स कहते हो ना, तो अगर आप भी करना शुरू करो ना, मैं आप सारों को कहूँ दिन में 2 दफा करें, 10 दफा करें, तो आपने नहीं 3 दिन के बाद कहना नहीं यार ये क्या। सो व्हाट मैडम इज सेइंग इज एक्चुअली अ गेम, एंड इफ यू मेक इट इनटू अ गेम देन दे कीप ऑन डूइंग इट, or if you give them video games, then they're sorted for life. And the other thing is there's a cultural difference. My son is in USA. आपको पता है उनके फ्री टाइम में जो उनका जो टाइम होता है when they sit together in the dorms and all that, what do? They discourage screen time. वो बैठ के bracelets बनाते हैं, friendship bands बनाते हैं वो बैठ के। तो वहाँ पर ये नहीं हो क्या आ जाता है कि जाओ के स्क्रीन और वीडियो देखो हमारे। Unfortunately our mothers, for everything there is a screen time. But he's so expert now in making friendship bands. So anyone who wants to buy इससे friendship बेहतर bands, conversion please exercise। contact Dr. Seema Kuyum. हाँ जी, क्या? Anyone who wants to buy friendship bands, Yeah, contact ask Dr. him to Seema. make because he's so good. अब उसकी जो आई की टायर्डनेस, कंप्यूटर में बैठने, वो सब ठीक हो गई है। डॉक्टर जी, मैं आपकी इजाजत से कह रहा था Sir, मैं बिल्कुल। basically उनको पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चे की पसंद की कोई भी नहीं एक्टिविटी है इसको एज का, जो भी नहीं एक्टिविटी। Excellent. This is excellent. Coloring, Coloring सब। करनी है, मतलब they have to do more near work so that they converge more. So और अगर ऑलरेडी उसकी चीजें टूटती हैं, वो वर्ड्स जंप कर रहा है, उसके सर दर्द हो रहा है, तो अगर आपने उसको ये कहा तो उसने नहीं करना. So make them do whatever they like. Case 5. 12-year-old complains about having difficulty reading for too long. He says the vision at distance is fine and the vision at near is initially fine, but then the words start splitting. They become 2 and sometimes 3. पुराना वाला ही केस चल रहा है. Mother also says that he skips words and lines while studying. There is no family history of glasses. Vision perfect है, Hirschberg normal है, cover uncover में कोई deviation नहीं है, fundus normal है. आपने देखे मैं जितने भी आपको बच्चों का बता रहा हूँ उसमें cover uncover जरूर बता रहा हूँ, बिकॉज वो आपका चेंज करता रहता है उसकी वजह से कि आपने उसको ऐनक देनी है नहीं देनी, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है क्या नहीं करना. रेटिनोस्कोपी शोज नो रिफ्रैक्टिव एरर. ये तो एग्जैक्टली वो पिछला वाला ही नहीं आ गया. सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? आपने कन्वर्जेंस की और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कन्वर्जेंस में. अब क्या करेंगे? सॉरी, इसका अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है. अब कैसे पता चलेगा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है भी या नहीं है? मेजर करेंगे. कैसे मेजर करेंगे? वेरी गुड. अगर वो नहीं है, सबके पास नहीं होता, हाँ, लेकिन वो उसमें भी कन्वर्जेंस में भी हो रहा था ना. Okay. Is there any other? So this is a subjective way, ना, which is fine. कोई objective way भी है? वही उसने AC by A रेशियो ही बताया, उसको मेजर कर लेना. कोई ऑब्जेक्टिव वे भी है? हिंट देता हूं, अगर आप आइलैंड पे फंसे हुए हैं ना और आपको एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है तो वो रेटिनोस्कोप होना चाहिए. अब मुझे बताएं कोई है तरीका? Do you know what dry retinoscopy or dynamic retinoscopy is? पता है क्या होता है डायनामिक रेटिनोस्कोपी? शाबाश. So this is what you're doing. You're asking the patient to look at a distance, and then, so for instance, I'm doing his. I will ask him to look at a distance. Now he's looking at a distance. I neutralize it, and then I ask him to look in the retinoscope, and I will see the reflex change. If there is accommodation, if there is no accommodation, or less accommodation, the reflex will not change as briskly, or not change at all.
क्यों? क्योंकि जब दूर पे देख रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव एरर आंख का फर्क है, और जब नजदीक पे देख रहा है तो वो प्लस ऐड कर रहा है. सो यू विल सी द रिफ्लेक्स चेंज. ड्राई रेटिनोस्कोपी जब करेंगे और रिफ्लेक्स चेंज नहीं हो रहा, उसकी स्विफ्टनेस और उसकी डायरेक्शन, दैट मीन्स इसकी अकोमोडेशन नहीं है. और अगर चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसकी कम है. दिस इज द पेशेंट जिसके अंदर, सो accommodative insufficiency is a sensory motor anomaly of the visual system that is characterized by an inability to focus or sustain focus at near, demonstrated clinically by an insufficient amplitude of accommodation based on age expected norms. Now, this is the patient who will be given reading glasses because there is no other option. So, अगर इस patient को आपने वो near work करने पे लगा दिया without looking at this, तो he will be miserable. So वो जो कहते हैं ना स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको शायद डिसलेक्सिया है. There are many other elements which need to be, so most of these functional psychologists are referring such patients just because ये चीजें rule out कर लें. Convergence insufficiency तो नहीं है, accommodation insufficiency तो नहीं है, आपका dyslexia और इन सारी चीजों का जो, सॉरी, जितनी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उन सारों का, इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, एंड यू हैव टू एक्सक्लूड दीज एटलीस्ट, वेल दीज 3: myopes, refractive errors, convergence insufficiency and accommodation insufficiency. So जब तक इनको आप रूल आउट नहीं करोगे, आप किसी को डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबल नहीं कैटेगराइज करना चाहिए. आजकल ऑटिज्म में लेबल कर देते हैं. आजकल सो 3 आप डायग्नोसिस बहुत देख रहे हैं: ऑटिज्म, डिसलेक्सिया एंड ADHD. आपको पता है ADHD बहुत ज्यादा प्रेवलेंट क्यों हो गया? गोइंग ऑफ टॉपिक, डू यू नो व्हाई इट्स प्रेवलेंट? सॉरी, स्क्रीन टाइम. There are studies, one was done in John Hopkins where they made kids sit in front of a screen जहाँ से waves आ रही थी, and then they did MR scans and they saw the brain activity went up 5 times. So बच्चा तो fidgety होगा, तो उसको ADHD कर दिया. Madam, do you want to add something to this? इस केस में तो खैर, when you're talking about ADHD, आजकल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी बच्चों को इसलिए डाल रहे हैं कि जब उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो उनका स्पीच डिले होता है, और अगर कहीं खुदा ना खासा रिफ्रैक्टिव एरर भी ऐड ऑन हो गया तो पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है एंड दे लेबल एज ASD. सो अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, आई गेट टू सी पेशेंट टू लेबल ऑटिस्टिक बिकॉज द पुअर आई कॉन्टैक्ट. बेसिकली आइदर दे आर डेवलपमेंटल डिले, so you have to rule out that they are developmental delay, then you have to do the retinoscopy. अगर नहीं, मतलब it is like वो क्या कहते हैं, वो मतलब वो हदीस कुरान की तरह आपने रेटिनोस्कोपी करनी है. और रेटिनोस्कोपी में अगर जो भी एरर आते हैं, अगर बच्चे का विजुअल डिले, दैट्स व्हाट आई बिलीव, चाहे वो 1 साल का बच्चा है, अगर छोटा, अगर फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया भी है तो मैं उसको भी करेक्ट कर देती हूँ, जस्ट फॉर द रीज़न कि ये हिंड्रेंस भी उसके रास्ते से निकाल दो, क्योंकि फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा बहुत तो शायद उसको ब्लरिंग होती होगी ना. सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द पाथ, then let's see whether the child starts responding or not. And they do, they come back after 4 months, 5 months, 6 months, like a miracle they start seeing. ऑटिज्म, वो ASD का लेबल उनके ऊपर से हट जाता हैगा, विजुअल डिले खत्म हो जाता हैगा. उसके बाद फिर आप टेलर करते रहो अपने ग्लासेस को जिस तरह से आपने टेलर करना हैगा. आप उसको कम करो, ज़्यादा करो, बट उस बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन, दे हैज टू कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो रेटिनोस्कोपी इज अ, it's a crime if you don't know how to do it. So they say pediatric ophthalmology and strabismus वालों के लिए रेटिनोस्कोपी is a must. I feel ophthalmologist के लिए रेटिनोस्कोपी is a must. And you can see, अभी आगे जाएंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा hopefully. So 2-year-old boy prescribed hyperopic glasses on previous visit is brought to the office with mom who says that her son just won't keep the glasses on. So you repeat the refraction and find the prescription to be correct. What do you do? बच्चा नहीं ऐनक पहन रहा, सॉरी, ओवर करेक्ट करेंगे नहीं, रिफ्रैक्शन के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन सही नजर आई है.
अभी इसकी हिंट डॉक्टर अशल ने शुरू में बताई थी. It is very important. Spend time with the patient and their parents. There is a learning curve attached to glasses. जब आप glasses पहली दफा पहनते हैं, एक तो कभी यहाँ कुछ पहने ही नहीं है, so it seems जैसे बड़ा अजीब सा है. दूसरा, आपकी जो image size है वो सारे change हो रहे हैं. So emphasize the importance of glasses due to the development and maintenance of child's visual acuity and alignment of eyes. टेल देम कि पहला हफ्ता 10 दिन मुश्किल होगा, तब आपने वालदैन बनना है और जबरदस्ती बनानी है, उसके बाद बच्चा खुद मांगेगा. ठीक. चेक द फ्रेम्स. फ्रेम शुड नॉट बी टाइट, शुड नॉट बी टू बिग फॉर देयर फेस एंड दे शुड नॉट बी टू टाइट. काफी दफा बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पहन रहा होता क्योंकि वो बहुत टाइट करके उन्हें लगाया होता है. जी सर. अगर फ्रेम्स बहुत बड़े होंगे तो आपको ऑप्टिकल सेंटर खराब हुआ है. हाँ, तो ऑप्टिकल सेंटर उसका सही निकला हो. और ये आगे इस तरह का एक केस रखा हुआ है. Mom brings the child again after a few weeks and he is still not wearing the glasses despite encouragement. अब क्या करोगे? नंबर सही है, उन्होंने वालदैन भी बन गए हैं, बच्चा फिर भी ऐनक नहीं पहन रहा. अब क्या करोगे? अशल भाई. ग्लासेस ना पहनने की बहुत सी रीजन हो सकती है. ओवर प्रेस्क्रिप्शन, अंडर प्रेस्क्रिप्शन, समटाइम्स बच्चों को फ्रेम पसंद नहीं होता. सिर्फ सिंपल रीजन, मतलब मेनी टाइम्स आप हर चीज रूल आउट कर देते हैं. बच्चा बात करते हैं तो फ्रेम ही पसंद नहीं है, फ्रेम पसंद नहीं होता, बिग फ्रेम्स, टाइट फ्रेम्स, मतलब देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. हर तरह की रीजन होती है. अच्छा, जैसे डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के लिए कहने का बर्डन है. आप देखेंगे फोटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की थीम ही क्या है? फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस. सो ग्लासेस एक ऐसी चीज है हर कोई फ्रीडम चाहता है. तो बच्चे तो ज्यादा मूडी होते हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है टॉलरेट करना. मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं कि आप सिर्फ 0.50 की प्रेस्क्रिप्शन उनकी बड़ी होती है, वो चेंज करते हैं और बच्चे वो रिजेक्ट कर देते हैं. सब कुछ ठीक होता है लेकिन चेंज बच्चे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. तो उसके लिए मैं उनको कहता हूँ कि आप एकदम एब्रप्टली चेंज ना करें, पुरानी क्लासेस लगाएं और 1 घंटा सुबह शाम नया नंबर जो है उसको लगाएं. सो ग्रेजुअल करें. सो इसमें कुछ भी हो सकता है. अब वो डिग आउट आपको करना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी द रीजन. One, that's absolutely right. The other is, what you can do is, if you're absolutely sure and you don't want to under correct or over correct, because बच्चों में time is of essence, साइक्लोप्लीज उसको दे दें. एंड सेकेंडली कि बेटा जिस दिन बच्चा रियलाइज कर ले कि उसको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है तो वो कभी नहीं ग्लासेस उतारेगा. तो कभी कभी छोटे बच्चों को इतनी जल्दी, हाइपरमेट्रोप्स को जनरली देर से पता लगता है. जो मायोप्स होते हैं दे अडैप्ट वेरी अर्ली. लेकिन मायोप्स के साथ एक सबसे बड़ा डिलेमा होता है कि अगर उसके ग्लासेस का नया फ्रेम सेम नंबर का भी बनाएंगे और ख़ास तौर पे अगर सिलेंडर है तो वो नया फ्रेम भी एक्सेप्ट नहीं करते. बिकॉज मायोप्स को बहुत, मुझे कम अज़ कम आई ऑलवेज हैड एक्सट्रीम ट्रबल चेंजिंग माई फ्रेम. ज़रा सा टिल्ट कर गया, ज़रा सा ये हो गया तो टूटा फूटा भी हो, मैं अपना पुराना वाला ही पहनती. और वो जो सर भी वही बात कर रहे थे कि वो जब अगर थोड़ा सा एस्टिग्मेटिज्म होगा और इधर टिल्ट होने की देर है, टिल्ट हो गई तो वो सारा कुछ दे विल नॉट एक्सेप्ट वो इट. फ्रेम को उतार कर टेबल पे रख के देखो कि वो हिल तो नहीं रहा. ऐसा भी एक केस आ गया. टेबल पे रखना पड़ता है फिर बेटा. So basically, give them a short course of cycloplegic drops. What that will do is, that will relax the accommodative effort. बच्चों का accommodative effort बहुत strong होता है. So if you just relax it, then they will sit into the glasses. That's exactly what Dr. Ashil was talking about also. If you give them a slightly undercorrected number, then it gives them time to sit into the glasses. If you don't want to waste time, you can give a course of cycloplegic drops for a week, 10 days, 2 weeks, so that they relax the accommodation, they sit into the glasses, and you get them out of the glasses. Sir, myopes के अंदर usually बच्चों के अंदर you don't find this problem because they adapt to it immediately. This is usually a problem of hypermetropes. माइप को तो ऐसे लगाएंगे और वो ठक बैठ जाएगा. So 99%. even when we tell myopes that, tell the parents that it's going to take some time for them to get used to it and they might reject it initially and then they'll start wearing it once they see
clear vision. More often than not, they're coming back and saying, oh, we didn't have a problem. The first time that they wore it, they didn't want to take it off. So clinic में So अगर it's अपना a- वो फ्रेम भी लगाते हैं ना तो उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. A smile comes on their face. It's the hypermetropes or the astigmatic patients who have a problem. हाइपरमेट्रोप्स आपको सबसे ज्यादा तंग करते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई. उसके बाद स्टिग्मेटिक मायोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उसकी रीजन ये है कि आपके पास एकोमोडेशन एक ऐसी चीज है जो ऑलवेज सेटल करती है, ऑलवेज अपना रोल प्ले करती है इन हाइपरमेट्रोप्स. मायोप्स पे ये फैक्टर नहीं है, बेसिकली एकोमोडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. सो जैसे ही हमें पता है वो क्लियर हो. हाइपरमेट्रोप्स पे एकोमोडेशन आपकी जान कभी नहीं छोड़ती. So उसको हैंडल करना पड़ता है नॉट की बेली. And yes, it takes a while, but I promise you, it's very, very, very satisfying when you see the kids' vision improve after this. It's very rewarding. It's very rewarding. So, case 7. See, we're building up on the age now. So, 15-year-old boy presents to your clinic for refraction after losing his glasses. He had early bilateral congenital cataract extractions in infancy and has been diagnosed with keratoconus. One pupil is large and irregular, the other is 4 millimeter and irregular. Uncorrected visual acuity is 20 by 400 both eyes, but it improves to 20 by 30 in each eye through a pinhole. Retinoscopy is not helpful due to difficulty viewing the retinoscopic reflex. You auto-refract the patient, but it gives error in both eyes. Have you seen these cases, keratoconus patients who are very difficult to deal with and very difficult to refract? What will you do to prescribe the glasses which give him the best visual acuity? One is stenopic slit. How will you retinoscope such patients? So they were saying that retinoscopy was not helpful due to difficulty viewing. So can you do things so that you can get a good retinoscopy? After dilating the patient, but if you see that the pupil is already pretty large, so now we don't need to dilate the patient. But yes, that is one strategy. If the pupils are very small and you have keratoconus, you dilate the patient so that you can do a better retinoscopy. This one not really helping. So what do? I'll give you a hint. What is the distance that you are doing a retinoscopy on? An arm's length. If you decrease this distance, what will happen? You'll be able to see the reflex better, right? But when you have to make the calculation, you will just take out the distance that you're doing the retinoscopy on. The other thing is, what happens in keratoconus or any other corneal ectasia? Irregular. So the center has a different reflex and the periphery has a different reflex. So when you come closer and just focus on the central reflex, because that is what is required to look at things, you will be able to get a better retinoscopy. So use a retinoscope with a bright light, move closer, but then adjust your closer working distance. So normally what we're doing is, if we're getting a retinoscope, we just take subtracting 1.5 or 1 or 1.2, whatever your working distance is. Now you're getting closer, so you have to subtract more. And concentrate on only the central reflex. So if you see these patients, the scissoring reflex is usually in the periphery. You get a very good central reflex. So you have to kind of train yourself to focus on the central reflex and not the others. Put your best estimate of refraction, including some astigmatic error, and then subjectively refine with large increments in Saphir. The other is consider stenopic slit. Now, how do you do stenopic slit? And? Okay. So you're doing it, the important thing is you're correcting spheres for both meridians, right? So you use spheres to put the conard of stem near the retina, rotate the slit until the patient has the best visual acuity, add plus or minus sphere to sharpen the image,
then rotate the slit to 90 degrees and add more plus or minus, and then record the two values on a power cross and then take out the refraction. This also is very, 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 very satisfying once you get to see that the patient's vision is improving. Now, with the amount of keratoplasties that have started happening in Pakistan, this is something that you will encounter very frequently in your office. And this is something that you should know. Come closer, do a retinoscopy, focus on the central reflex, and then do the stenopic slit. Okay, 10-year-old kid with 8 diopter of myopia has been involved in a road traffic accident. He has had orbital blowout fracture. On examination, he appears comfortable but complains of vertical diplopia. He has a big number, vertical diplopia. Cover testing reveals a 16 prism diopter of left hypertropia. The extraocular muscles are full. What could be the cause of the vertical diplopia? Excellent. So that's the first thing that you think about, muscle entrapment. But if there is muscle entrapment, then would you find the extraocular muscles to be full? No. So then what could be the cause? Inferior oblique paralysis, yes, but then once again extraocular muscle movements would not be full. You will have some problems there. CT scan shows non-displaced orbital fracture with no clear evidence of entrapment. So what you saw in the extraocular motility, you're finding it here also. It's being reinforced, so there's no entrapment. Now what other cause could there be? Hint though? He is a myope of 8 diopter. That's hint number 1. Should I give the second hint? Sir mentioned something about optical centers. Should I give you the third hint? What is the prismatic effect of refractive myopes or hypermetropes? तीनों hints दे दिए, जोड़ना शुरू कर दो. Shabash. Ji bete, you want to say something? So 8 diopter myopia, bilateral. There is no, there's a 6, on cover test you're finding a 16 prism diopter of left hyperopia. The extraocular muscle movements are full and CT scan does not show any problem. Optical center has been displaced. The kid's glasses are bent and crooked. Oh, fourth hint. Madam mentioned something that, always put the glasses on a table so that you can see whether they're aligned or not. What is the cause of the vertical diplopia? So they're crooked. The bent glasses have displaced the optical center, which is causing a prismatic effect. I promise you, I have seen 3 such cases who were advised Hess chart and who were advised surgery and who were advised, because with orbital floor fractures, you need to operate immediately for good results. So who were advised immediate fat release. Right lens is displaced up while the left lens is displaced down by 1 centimeter each. Right eye is viewing the world below the optical center, thus exposing the eye to base down prisms. Myopes, that's the lens that is used. So it's making a prism, right? And that's what the right eye is seeing. Base down prism in the right eye. Left eye is viewing the world above the optical center, thus exposing the eye to base up prisms. These would sum up to have a base down prism effect on the right. यहाँ तक समझ आ रही है? So as the glasses are bent 1 centimeter in either direction, the induced deviation is 1 times 8 diopter, because 8 myopia times 1 displacement, 8 prism diopter base down on the right, 1 times 8 diopter, 8 prism diopter base up on the left. So a total of 16 prism diopter of induced prismatic effect. So what you were seeing here, the 16 prism diopter on cover test, was because of that displacement. So all you need to do for such patients is align the glasses.
right? So the reason I kept this case is because, one, surgery is not a solution for every case. But our minds, because we are surgeons at the end of the day, our mind always goes to surgery. Two, right, but you're absolutely right. But if A with the minus A diopter, he can't even see clear here, right? So if you do cover uncover without the glasses, you might not get anything. B, if I had told you, and let's say this was a -4, then it would not have been that interesting, right? So, Chale, ma'am, is there anything that you want to add to it? No, I think it's well looked after. Case 9. So now we've gone to a 65-year-old. So 65-year-old complains both eyes are not working together. He also feels some waviness in the left eye. He is a diabetic, had trauma to the left eye when he was a teenager. He has taken consultation with many doctors, but most dismiss his presenting complaint. He is an avid reader and loves to drive and play golf, but now that he cannot do it, he is miserable. So all of these cases are real life cases. These are cases which I saw either during my training or after, and I just kind of... He has been prescribed glasses that improve his vision, but he says it's just not right. ऐसे केसेस आपने देखे हैं? विजन 2020 है, नहीं डॉक्टर साहब कुछ मिसिंग है, नहीं डॉक्टर साहब it's not quite right, नहीं डॉक्टर साहब I'm not comfortable. What is your reaction? You get frustrated and say वहम है, right? कहते हो ना वहम है, जाओ यार कुछ नहीं हो सकता, साथ जो बैठा हुआ समझाओ इसको यार वहम कर रहा है, right? That's exactly what we do. This guy also has some waviness in the left eye. So maybe that the reason he doesn't feel right is because of this waviness. Now that could be Vahem also, but do an Amsler grid and you'll be able to know whether there's Vahem or not. And he has already been dismissed with his presenting complaint. I promise you, this case, I saw it about a year after coming back from my training. And when we had fixed him, and I'll tell you how we fixed him, he sent me an email and he said, I was at the verge of believing that I have gone mad. Because everyone was saying that vehmiyo, 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 this is, it's in your head, it's in your head, it's in your head. So on examination, the vision is 20/25 bilateral. So very good vision. Depth perception is 2000 seconds of arc. Not very good. So if your vision is that well, then depth perception should be much better. Cover uncover shows no deviation. Amsler grid shows mild distortion in the left eye. Retinoscopy shows refractive error of -1.5, -2 at 60 and a -3, -2.5 at 120. Fundus exam shows a macular pucker in the left eye. Now what will you do? So there's a macular pucker, there's distortion. Do you go in and operate or not? So you don't go in and operate. Why? The vision is very good. So there's no reason to operate. Now, I'm assuming a lot of retina surgeons said that, you don't need to undergo surgery. Just wear glasses. But it's just not right. He's a golfer, he likes reading, the depth perception is pretty bad, he likes driving, his quality of life has gone down. Vision is 20/25. So there's a macular pucker which is causing both eyes not to work together. But what if you just displace the image slightly? There's fovea and then there's parafoveal area, there's a horopter area. What if you slightly displace the image? Then do you think the eyes will start working together? Yes, no, maybe? Maybe.
give him a prism trial. In the office, put prisms over his glasses and check his depth perception. With 12 prism diopters, so I just put one prism, he's looking at the front, he says, no, move it up, no, move it, it's getting better. It's getting better. This is pretty good. And then I did a depth perception test. So prisms are kept over his glasses and depth perception checked. With 12 prism diopter out in front of the left eye, his depth perception improved to 100 seconds of arc. So from a 2000, it went to 100, but just displacing it some in one eye. On Snellen chart reading with both eyes, he no longer feels that the eyes are not working together. On reading at near, he feels that the eyes are working together now. I'm still not convinced. You're sitting in a very closed environment, you're sitting in an office setting. So I asked him to go sit in outside in the waiting area with the prisms on for half an hour, just to see whether the images displace again or not. Right? 45 minutes of wearing the prisms, he says that his eyes are working just fine. By the way, this guy was a professional golfer. Okay, so what will you give? अब आप prescription क्या दोगे? Retinoscopy shows a refractive error of minus 1.5, minus 2 at 80. Can you prescribe this number? Minus 1.5, minus 2 at 80 with a minus 3, minus 2.5 at 120 with the 12 prism diopter base out? No, why not? So this can potentially cause a more imbalance as he goes forward. Split it. Split it. Give half, 6 prism diopter in one eye, 6 prism diopter in the other eye. So this patient I saw 2015. He's still playing veteran golf on a professional level now, and he seems to be very happy. MashaAllah. No surgery required till date. So, a 65-year-old presents with the glasses, not being able to help her vision. Her previous prescription was a plus 2, minus 2 at 90, bilateral with an add of plus 2.5. On pinhole testing over the glasses, the vision improves to 20/20. Slit lamp examination shows nuclear sclerosis. Fundus examination is normal. What do you do? Do you do the surgeries or do you give her glasses? Sorry? Glasses. Depends what your financial state is by the end of the month. So you offer cataract surgery. It depends upon the demand of the patient. It depends on the demand of the patient. So you offer cataract surgery. The patient is not ready for cataract surgery just yet and cites family commitment. She asks if it can wait for 6 months and if some interim arrangement can be made. Okay? What can be done now? You refract the patient and retinoscopy comes out to be plus 0.75, minus 1.5 at 90 bilateral. You prescribe glasses of this number and add a plus 2.5. And the patient comes back after a week and says that the distance vision is excellent, but can't read with the new glasses. Nazdeek pe problem aa gayi. What has happened? Sorry? One is because of the cataract, but she still wants to wait. So is this something that you could have done better for refraction? That's the question, right? Because if there is nuclear sclerosis bad enough, then with these glasses, the vision at distance should not have been 20/20. So that's one clue that there's more to it. You forgot to adjust the add when you adjusted the glasses for near. Now, if you see, patient's previous number was a plus 2, correct? Add of plus 2.5, plus 2 minus 2. So now take a spherical equivalent of this. What is the spherical equivalent of plus 2 minus 2?
plus 2 minus half of SIL. So spherical equivalent would be a plus 1. And she was wearing a plus 2.5 on top of it. Right? So what was the glasses number that she was using for near? Was it a plus 2.5 or a plus 3.5? Plus 3.5. And now what have you done? You have just adjusted for minus 1.25. Right? समझ आई या नहीं आई? So spherical equivalent of near prescription just became plus 2.5. There's an under correction of plus 1 for near. So new glasses give her plus, you have given her 1 diopter less than the required. Prescribed glasses plus 0.75 minus 1.5 with an add of plus 3.5. So the reason I kept this case is because a lot of times optometrists and doctors, what they do is, if the distance vision is perfect with the glasses and she is 60 or above, just add a plus 2.5. It does not work that way. It is a very common problem. We see these patients every day in our offices. They will come, they will say, this does not feel right. Vision is 20/20. You are 60 plus 2.5 से ऊपर क्या accommodation relax होनी है? But it is, please go back to the history, see what the previous number was, and then adjust it accordingly. So see how small things can improve on the dissatisfied patient. This is the patient who will keep on hopping and saying, very lousy doctor, very lousy doctor, very lousy doctor. The mistake we make is कि जब उसको near add करते हैं तो उसको पढ़ाते नहीं है. That's the other mistake that we make. पढ़ाओ तो सही ना. Which will take another 5 minutes. Hardly. Hardly. So a 23-year-old man returns to your office 1 week after receiving the spectacles you prescribed for him. He had never worn glasses before. He says the whole world is like a fish bowl. हर चीज इस तरह हो गई है. He feels that the floor is coming up at him. The doors are falling towards him. He is dizzy. He has a headache. Visual acuity is 20/50 without correction, 20/20 with correction. How many of you have seen such cases? Very common. Extremely common. What has happened? So oblique astigmatism में ये ज़्यादा मिलता है. So what you need to do is when you are giving the glasses कि उसको frame लगाओ. Ask the child या जो बच्चा बैठा है इसी children, ask the child to walk in your clinic. इधर से उधर चक्कर लगाओ. अगर आपकी टाइल्स लगी जिसमें लाइंस हैं उसको बोलो इन लाइनों को देखो कि वो ऊपर नीचे तो नहीं नजर आ रही. And make him sit with that frame for at least 10 minutes. At least. And then ask the child कि अब ठीक हो, अब सर में दर्द तो नहीं हो रहा, अब दो तो नहीं नजर आ रहे. तो this is very important and always instruct the parents, counsel them कि जब आप फ्रेम बना के लेकर आओगे और अगर बच्चे को सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नजर आ रही हैं तो ऑप्टिशियन के पास वापस जाओगे और उसकी फिटिंग को सही कराओगे. So फ्रेम जब लेने जाओ तो बच्चा साथ लेकर जाओ. So madam, अगर यही patient, you see him, you make him do all of these things. His vision is 20/20 by the way. It is always. But he is not. He's falling over. What will you do then? You correct the axis. You correct the axis. Sometimes you change the axis. Sometimes you compromise on the distance vision just some so that he gets used to it. Sometimes you transpose. Minus sil ko plus sil ke andar le jao. You understand? And another thing happens कि आप यूनिओकुलर जब कर रहे होते हो तो वो 6x होता है, मायोप स्पेशली. Yes. जब आप प्लीज उसके बाद उसकी बाइनोकुलर विजन भी चेक करो, which is the functional vision, and the vision drops. That means you have to undercorrect. Matters a lot. Yes. So what madam said was basically a distortion. The things that she was saying, walking, floor up, floor down, things. So it's basically a depth perception problem. You can also check their depth perception and that would be distorted. अगर आपका फ्रेम भी नया बना लें या फ्रेम आपका ऐसे
कहीं दब गया और टिल्ट कर जाए और सिलेंडर लगा हो तो डेप्थ परसेप्शन गड़बड़ हो जाती है. So you either, these are the things that you can do. You reassure the patient. If the patient is younger or the astigmatism is lower, then the patient will get used to it. So remember that thing that we said, please give it time and they will get used to it. Cannot happen at a -6 astigmatism or someone who is a 20-year-old. Can happen in a -3 astigmatism in a 4-year, 5-year-old. But this you have to do something else. When you're writing the prescription, please decrease the base vertex distance. The closer the lenses are towards the eye, the less distortion they're going to be. Rotate the cylinder towards 90 or 180 meridian, might compromise the vision slightly, but you kind of rotate it just so that they feel right. Decrease the power of cylinder will once again compromise, but will at least make them get comfortable. Be sure the lenses are of minus cylinder type and ground the base back surface. So a lot of times you have to write these things down so that the optom or the optician can incorporate these things. Tell them to measure the optical center so that they are completely centered. You've given the perfect number in the office, they've been completely comfortable, they come back and they will throw a tantrum even if it's a 5 degrees of change sometimes. Sometimes they will, even if it's a 90-degree change, they will completely adopt to it. But sometimes they won't. They will throw a tantrum if the optical center isn't right, because there's a prismatic effect coming also. And then consider contact lenses. Case 12. A 65-year-old having bore ho gaya to bata do, we're 10 minutes up already. So if we're chalte jaye. A 65-year-old woman having a past history of amblyopia treatment and a refraction of -9 plus 0.5 at 116 and a -6.5 plus 0.75 at 70 undergoes cataract surgery with a post-op refraction of -1 OU. The vision is 20/20, but she complains that everything is double. आपने परफेक्ट सर्जरी की है, आप तो हर वक्त जब सर्जरी कर रहे होते हो तो यही सोचते हो ना कि पेशेंट शुड बी इमेट्रोप, पेशेंट शुड बी इमेट्रोप, दैट इज द न्यू normal, right? You still left her, because big myope, you still left her at a -1, but she says that everything is double and she can't do anything about it. Alternate cover, ab double kyun ho sakta hai? Either there's a deviation, so if you've done a local injection and injected bupivacaine, then it's going to cause restriction. It can cause deviation of the eyes. So you first do the cover uncover test, but it's normal. So why is this patient seeing double when uniocally the vision is 20/20? She has a good refractive error, not too much. What could have happened? The lens is not tilted. There's not much astigmatism. She doesn't have any astigmatism. Come on, people. What could be the reason? Normal. Something not eccentric fixation, but something related to that. Move forward. ये पहला वाला सेंटेंस पढ़ो ना, पहला वाला sentence लाइन पढ़ो। पढ़ो ना यार. -9 in one eye, -6.5 in the other. So the eye which is wearing a -9 will have a minified image or a magnified image. And a -6 will also have a minified image, but there is a discrepancy in those images. One is much smaller than the other. And she is 65, and she's worn such glasses all her life. So brain has adapted to that discrepancy, and now once you've taken that discrepancy out, the brain does not accept it. Isn't it cool?
So this is an unusual case of anisoconia. You've taken out the anisoconia, but the brain is so used to the anisoconia, which was there for 60 odd years, that it's not accepting it. 10 years ago, her refraction was a -8 and a -2.5, and she had x-lit stereopsis at that time. So -8 -2.5 कितना हो गया? A difference of 5.56 हो गया. She has a 5.5 diopter of anisometropy in childhood, which was so well treated that the brain has fully adapted to the different image size. All compliments to the ophthalmologist who managed her. He was emblyope. He managed it. He managed it so well that there's good depth perception. He's managed the anisometropy and anisoconia. By doing the cataract surgery, you eliminated the anisometropia. This would cause the image sizes to become equal by enlarging the image on the left side. This in turn would induce an unusual anisoconia of 5 times 5.5, 11%. Right? As the brain was adapted to the image difference. Most adults can tolerate 3 to 4 diopter of anisometropia, but few can tolerate 11%. So if you think of it, you've actually taken away the anisoconia, right? You've corrected the anisometropia. But the brain of this person thinks, no, you've actually created that because it's so used to it. So what will you do for this patient? क्या सर? कुछ गलत किया हुआ है? होगा सर, 100% होगा. So what do you do for such patients? हाँ? Vision compromise कैसे करोगे? अब तो हो गई. और सर्जरी हो गई है ना? So we can place a 4 diopter contact lens on the right eye so that the patient requires glasses of -5 diopter OD and -1 diopter OS. So you are once again creating that anisometropia, taking the patient back to pre-operative place so that the brain adapts to it. Now, what does the patient want? Does the patient want 20/20 vision with glasses free at distance, or does the patient want comfort? Right? So when we think in terms of 20/20 vision, that does not always equate to comfortable patients. And that's what we're talking about. And this is one scenario which shows you how important past history is. Now I'll tell you what happens. We're all guilty of it, depending on which, in your private practice, depending on which time of the month you're there and the financial state. But once we see cataracts and operable cataracts, let's operate, right? And we actually forget about what the past history is, primarily because we're also thinking that after the surgery, this patient will hopefully not require glasses. That's our aim, na? So take home message in this case is, please take a step back, look at what the past history is. It is absolutely important. Now, there are many doctors who don't write any prescriptions, but all doctors give glasses prescription. So you will get, and most patients, not all, most patients keep a record of it. So they will have this thadda of optical refraction cards. Please look at it before you plan your surgery. You can do an IOL exchange to restore the difference between the two eyes, and you do refractive surgery. So this is the patient where you would be counseling him or her pre-op that, see, we're getting rid of the cataracts. You will require glasses. We're making sure that you are in glasses.
because there's a big chance that your brain will not adapt to it. Want to see? Put her in glasses, give her a -1 diopter refractive error and see whether you're comfortable with it or not. Give her contact lenses and see whether you're comfortable. I have dealt with such cases and it's a nightmare. There are few, actually two, who got their premium lenses from the US, spent thousands of dollars on it. They are miserable and they wanted to be taken out. And when you say, okay, you don't need to put them in glass, you have to be in glasses, they say, we spent so much money and we were told we will not require glasses. So this conversation should be happening before the surgeries, not after. Sir, induce कर रहे हैं. We are inducing a -5 diopter. तो हम opposite जा रहे हैं ना. आप सोचें ये बंदा है जिसका +4 diopter का hypermetropy है. आप उसकी refractive surgery कर रहे हैं ताकि आप माइनस में ले जाओ. सर दोनों आंखों की हो गई ना. हाँ यार मेरा ख्याल है काफी दिया था इसको. ये मेरे पास तो साल बाद आए थे तो दिया था. And usually now this is one other reason why, I mean, you know, some people advocate doing both eyes together. I don't. No. It's being done in the UK now. Yeah, but no. But no. Not because, see, the infection rates are very little. It's a 0.01% endophthalmitis But still, rate, you need right? to see the result of But the we first need to eye. see the result and see how the patient is reacting and adapting to things before you kind of jump in. ये बच्चों में भी जो IOL एडवोकेट करते हैं कि वन सिटिंग में दोनों पहले एक को IOL डाल लो, बाद में उसका रिफ्रैक्टिव एरर देख लो, हाउ इट इज गोइंग ऑन, एंड देन 3-4-5 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव. Should we go to the next one? Ma'am, anything else that you want to add? आई थिंक नहीं? वन थिंग मुझे इतने सारे केसेस में एक चीज आई थिंक मिसिंग है, वो ये कि वी हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस टू डू द नियर विजन ऑफ एवरी. Yes. सिर्फ 60 साल के बाद नियर विजन नहीं करनी, बच्चों की भी नियर विजन करनी है. Okay, let me just check how many are left. Okay, 2 left. So you do a patient's refraction which comes out to be -4 diopter in one eye and -1 diopter in the other. You prescribe her with -4 in the right and -1 in the left with an add of +2.5. She comes back after a week complaining of vertical diplopia while reading at near. Alternate cover shows no deviation. क्या हुआ? कुछ दो आए नहीं तो फिर टाइम है भाई. 1 घंटे का नहीं था. Gee, what has happened? Let me take you back to the prismatic effect thing. जब glasses टेढ़ी हो गई थी. 10 बजे का टाइम था. टी ब्रेक खत्म करें? यार क्या हो गया तनवीर यार? हाँ. So what has happened? ये और कोई नहीं पढ़ाएगा वैसे, पढ़ के जाओ. What has happened? One thing is that the near addition could be wrong, but then when you make them read, they're reading fine with just the addition. But that's how I want you people to think. Rather than saying, oh, you know, it's something in the head of the patient, start thinking what you could have done differently. There's a prismatic effect due to the glasses. The patient normally reads 0.7 centimeters below the optical centers of executive glasses. So, sir, आपका क्या नाम है? डॉक्टर जाहिद शुरू से एक चीज कह रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर. It is absolutely important to keep that in mind. So in the right eye there is a -1, 1.5 diopter with a 0.7 to 1.05 prism diopter base down prismatic effect.
once again there's anisometropia ना, एक में -1.5 है और दूसरे के अंदर +1.5 है. मतलब जो फर्क आ रहा है, -4 से +2 करो और -1 से +2 करो. In the left eye, there's a +1.5 diopter with a, so it's a 1.05 diopter base up effect. So when they're looking straight ahead, you're in the optical center, and therefore there's no diplopia. When you look 0.7 centimeters down, there's a prismatic effect in this eye and this eye. So both eyes are not working together. And that has started causing a net prismatic effect of 2.1 prism diopter. So what do you do for such patients? First, you reassure, because brain is a very interesting thing. And many patients learn to fuse and physiologically adapt to small fusions. अगर यही होता 10 prism diopters का, I would have not been able to reassure. It's just a 2 prism diopter. Now, if you see the obliques, especially in few oblique overactions, you see this much in the primary gaze and it's not causing a diplopia, but when they look here and it increases, it starts causing a diplopia. So first you reassure the patient that you might get used to it. If they don't, then you give slab off prisms, you can give Fresnel prisms over just the bifocal segment. You can also give contact lens in center of glasses, because all of that anisoconia will go away if they're wearing contact lenses for distance and then using their near vision. And you can separate the glasses for distance as well as near. और एक सादी चीज भी कर सकते हैं. क्या? Very very simple. क्या? Tell her to remove near के लिए ऐनक के बगैर पढ़ लो. Yes. Monovision तो वैसे ही बन गया हुआ है ना. There's a -1 and a The O. best thing to do in your life is. वैसे भी -4 -1 को जो मायोप्स होते हैं ना, Yes. -4 -1 वाला भी जो है दोनों आंखों से क्लियर देख लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट. मैडम मंथ के आखिर में आप एक एडवाइस नहीं दे सकते. मंथ के आखिर में एडवाइस नहीं दे सकते. यार फीस ज्यादा ले लो. See, so much is driven by economy. And we have So you charge them a consultation ज्यादा चार्ज कर लो ना. मैंने give them half an hour and charge more. So this is the last case, I promise. So 40-year-old patient presents with recent onset horizontal diplopia. He has been wearing glasses of +5 diopter and -5 diopter forever. On alternate cover test, he has a 4 prism diopter esotropia. You prescribed him 4 prism diopter base out prisms over the glasses, but he is not comfortable with them and wants an alternate solution. What are the solutions that you can give? Once again hint कराता हूँ, डॉक्टर जाहिद ने ऑलरेडी इसको काफी दफा किया हुआ है. So there is an obvious esotropia. Now this usually is an esotropia which patients adapt to, but this patient is not adapting to even after reassuring. So you give them prisms to cover this micro, and he's not happy with the prisms because prisms do compromise on your depth perception slightly. So what can you do? बंद कर दिया यार. The desired effect is 4 prism diopter base out prism. That's what you want ना. आंख अंदर को जा रही है, base out prism देंगे ताकि वो आंखें साथ काम करें. Displace the right eye plus lens's optical center 4 millimeter to the patient's right. So you are now inducing a prismatic effect by displacing the optical center. This will give 2 prism diopter base out prismatic effect in the right eye. 4 centimeter shift किया ना, 5 number था. 0.4 times 5, 2 diopter का change आ गया. Displace the left eye's minus lens, optical center to the right. This will give a base out prismatic effect in the left eye. Net effect आ गया 4 prism diopter base out effect.
ग्लासेस का जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट है उसको यूज करो, एडिशनली देना. सो यू टेल, when you're sending it to the optom, you tell them that I want this to be displaced. The optical center should not be at the optical center, it needs to be displaced. So now the take homes. Spend time with your patients. Trust them unless you find otherwise, which means don't dismiss what they're saying. You will always, always, always be able to dismiss the things once you've done your examination. But don't dismiss them on what they say. Dismiss them after proving what they're saying is in their head. Attention is in the detail. There is not one single solution to everything, which is something that we abuse so much. We advise something to the patient. It's the patient's right to say, I don't want this treatment option, give me another. Normally what happens is when the patient says this, we flare up. We flare up. Okay, then go to someone else. They never say that. Okay, then don't, if you're not going to follow what I'm saying, then the worst thing that I've heard, गोरा बैठे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कैसी माँ हो तुम, बच्चे के लिए ये भी नहीं कर रही. Now I tell you, any woman or any parent, the biggest compliment to them is you're a good parent. And the worst compliment ever, no matter how successful they are, is that you're not doing a job right as a parent. Never say that. Have you heard this being said? परवाही नहीं अपने बच्चे की. Please never say that. So I think the take homes are patience, attention to detail, and retinoscopy. In तीन चीजों को please make it your habit. The residents who are sitting here, I know we have excellent optometrists now. I know your autorafs work like a charm. Attention is in the detail. Don't dismiss your parents. Show patience and retinoscopy. So retinoscopy, I know we have these handheld autorafs. We have all fancy gadgets, and they're pretty accurate. But when you're doing your retinoscopy yourself, there is, and Madam will vouch on this also, Dr. Ashur also, when you are doing your retinoscopy yourself, there are many things that you would be finding otherwise also. Patient's behavior, what type of thing will he tolerate or she tolerate, many things. So residents, I promise you, you will learn cataract surgery before you finish your residency. That's a promise. But I promise you, if you don't do your retinoscopy now, you will never learn it. So please, 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 I think retinoscopy is something that is absolutely vital. No matter how good a surgery you do, a dissatisfied patient is equal to you being a lousy service provider. And one life experience I would just like to add, just a life experience, beta. I'm a high myope, and when I was in class, I think class 1 or maybe much younger, I used to wear my glasses, and my mother always used to tell me that you look very nice with your glasses, and I was very, very confident wearing my glasses. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, किसी माँ को बोलो कि आपकी बेटी खास तौर पर उसको ये ऐनक लग गई, तो आई हैव हैड पेशेंट जो कोलैप्स भी कर गए, and start crying. This one patient, one family came to me जिसमें माँ, बाप, दादा, दादी, they were all there. The mother was wearing glasses, and I said कि बेटी को भी glasses लगते हैं. तो वो बहुत घबराई, बहुत परेशान होते. ऐसे मेरे मुंह से निकला, यार जब तुम इसका रिश्ता करने लगो और लड़का कहे कि ये ऐनक वाली लड़की चाहिए, तो उसको निकाल के बाहर फेंक देना घर से. That boy should not be entering your house. When the mother was leaving, she hugged me. उसने मुझे गले लगाया
उसने कहा मैं डॉक्टर सीमा कैन आई हग यू, मैंने कहा श्योर गो अहेड, व्हाट डिड आई डू टू गेट दिस हग? कहते यू मेड माय लाइफ, बिकॉज प्रोबेबली शी वेंट थ्रू दैट टैब ऑफ ग्लासेस। एंड देन व्हेन आई टोल्ड हर कि वो लड़का आपकी बेटी को डिजर्व ही नहीं करता जो कहता है कि ये ऐनक पहनती है, एंड शी स्टिल रिमेंबर्स मी। वो जो 4 से 5 चीजें आपने बताई थी उसमें ऑप्टिकल सेंटर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर एक और बात, ऑर्थोलैब का है ना, वो आईपीडी सही नहीं देता, तो 2 मिलीमीटर ज्यादा होती है, आपको खुद करनी होगी या एडजस्ट करना होगा। और आपका आईपीडी चेंज होता है ना, व्हील में फर्क है, नजदीक में फर्क है, बिकॉज दिस कन्वर्जेंस व्हिच इज कमिंग इन आल्सो। सो नॉर्मली when you're ordering groups, you have to give distance near binoculars. So it is very important to see all of these things. Bottom line attention is in the detail. Please focus on the nuances rather than let's do surgery. बच्चों को उस वक्त से ऑब्जर्व करना शुरू करो जब कमरे के अंदर वो दाखिल होते हैं, क्योंकि जब आपके सामने बैठ जाते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो चुका होता है। ऑब्जर्व देम टिल द एंड व्हेन दे आर लीविंग योर रूम आल्सो। समटाइम्स आई आस्क देम कि जाओ जाके बाहर खेलो, एंड आई गो आउट ऑफ माय रूम एंड आई जस्ट सी कि वो जब बाहर खेल रहे हैं तो वो कैसे खेल रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं तो वो कैसे दौड़ रहे हैं। यू हैव टू इवन सी दैट देयर बिहेवियर चेंजेस। मेरा तो सर मैसेज ये है कि गिव गुड टाइम, गिव गुड क्वालिटी टाइम टू द पेशेंट्स, और उसमें से अगर आपने 20 मिनट्स पेशेंट के लिए रखे हैं तो 10 मिनट्स में उसकी सारी चीज़ें अपने वर्ष की जो सारी चीज़ें स्टेप्स वो पूरे करें, और 10 मिनट्स काउंसलिंग के लिए रखें। बहुत सी चीज़ें आपकी काउंसलिंग से कवर होती हैं, बहुत सी उनकी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट्स की काउंसलिंग से कवर होती है, क्योंकि आपके पास आइज नहीं आ रही, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं who have brains, who have thoughts, who have minds। तो जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करते, सुनते नहीं है, तो आपको खुद भी कहते हैं कि हिस्ट्री भी आपने उसमें लेनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री का। तो अगर आपने हिस्ट्री नहीं ली तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगता कि प्रॉब्लम है क्या। And you सर do not अंग्रेजी में switch बोल रहे हैं, on गोरा the- बैठा हुआ है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं ये Okay. Speak. Basically, the problem is that you have to give good quality time, out of which half time should be spent in your steps of examination, history, and half time must be spent in counseling. Counseling is extremely important. And one request which I want to make to everyone who's seeing children in their private practice, which is very heavy, and when you're seeing cataract, glaucoma, cataract, and then a child walks in, your mind is on cataract. That child who's sitting there in your clinic for 1 hour, he's irritable, he's frustrated, he will not cooperate. So please, if you really want to do pediatric practice, keep 1 day simply for children. And do not call the children, do not make the child sit in your waiting area for hours, because he will not cooperate. So if you really want to do pediatric practice, then you have to have a dedicated pediatric day. And your time, after the time you've given it, do not give just 10 minutes. At 6 o'clock, 5 patients walking in. It's not done. It's 6, it's 7 o'clock, and then it's 8 o'clock. At least I take 45 to 60 minutes to see a child, because I have to talk to the parents. 40 minutes, so I just talk to them. 20 minutes, hardly I take 5 minutes to examine a child. Hardly 5, 10, 15. But what the next 40 minutes is just conversation, counseling, knowing their problems. And in our, everywhere I think it's so, but in our culture, the problem is the grandmother, the grandfather, the maternal aunt, the paternal aunt, the Mamu syndrome, which I call, because all the children are accompanied by a Mamu, then most of them are accompanied by a Puppy. So if it's a Mamu, I tell him, get out of my room. If it's a Puppy sitting there, they will tell you the mother knows nothing. She's mad. The only question is asking, why did you marry a mad woman if she's mad? And then you're bringing up children from a mad woman, because that woman is not mad. She knows everything. And then most of the time they will say they will not understand. They will say that the mother do not know the language. They know every language. Mothers know every language. Fathers know every language. So the child has to be accompanied by their parents, not by the daddy and the nannies and the cookies and the mamas. So for me, I have a big poster written there, no mamus allowed in my room. No cookie allowed.